Good morning, all of you. जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି StudyIQ OPSC ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ହେଉଛି 25 ଅଗଷ୍ଟ and we will discuss some national international news. So let's start. Good morning Sikha, good morning Birbal, good morning Afreen. So let's see some news highlights. Simran, good morning. 130th bill. 130th bill is quite important. Prelims point of view, or mains point of view, or from interview point of view. 130th bill is quite important. Cryptocurrency, we'll see that. New deputy NSA, airdrop test, women in CISF, multi-layered air defense system. Kiran, good morning. So first of all, 130th Amendment Bill 2025, we'll see in detail. 130th Amendment Bill 2025 was introduced by the Home Minister, Union Home Minister in fact, on 20th August 2025. Proposal कौन थला? Proposal was removal of Prime Minister, Chief Minister or ministers if arrested or detained for 30 consecutive days on serious criminal charges. When we say on serious criminal charges, that means again what exactly would be the serious criminal charges would be defined by the court or the agency जे अपन को ऊपर केस को impose करूची. Number one. Number two, it against this कि even if a person has been detained or arrested on a particular doubt, suspicious, it has not been proved in the court. Okay, that means even if there is no conviction by the court, then also that person would be removed from the office. Example आमे जदि देखिबा जेमती देखिबे झारखंड रो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, राइट, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, the chief minister, आम आदमी party. So in this scenario we have seen many such leaders have been arrested. They have been kept behind the bars for 3 months, one year in fact, 2 years in fact. Okay, so this is one aspect. If 30 days jail or any kind of detain, तो अपन को से पदरू हटे दिया जीवो, you will be removed from that post. Need for accountability. It acknowledges political outrage over politicians with serious criminal charges. As we have seen, ADR, Association of Democratic Reform, has been or is been the agency publishes data regarding the criminal charges against those are in politics. For example, when they file the nomination, से MLA हुंतु MP कैंडिडेट हुंतु से जो शपथ पाठ करा जाए, ओके, से तल नॉमिनेशन फाइल करिवा समय they have to produce every such detail of the cases. से serious criminal cases हो या केवल criminal cases हो, they have to mention a detail. So it was found majority of the politicians having this criminal background. So it will help to clean the system. It will help to end the corruption or any such kind of allegation against those members. Aligns with the public demand for clean governance, constitutional morality, seen by some as a positive step, but warnings of potential misuse, echo concerns about the institutional fairness. ठीक अछि, जदि आइन आसिबो, बिल आसिबो, that is okay, that is fine. It will empower the democracy, it will strengthen the democracy. But what if it would be used against or used to silence the opposition party's opinion, to silence the opposition views? That could be the suspicious among the people, so they are raising the voice.
risk to democratic principle, presumption of innocence, removing elected executives before conviction can undermine core rights. Core rights in the sense that they have been chosen by the people, or that is the people mandate. So if we are removing them before the end of the final end of the tenure, that means demeaning the people's mandate or challenging the constitutional morality. If you see the executive overreach, obviously potential misused by the investigating agency, we have seen in the past as well, say ED ho, CBI ho, ସେମାନେ opposition parties ର ଲିଡରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, केसेस इनिशिएट करवा, ये सब जिनस अच्छी। मोस्ट ऑफ द केसेस रे आपण देखिए ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस द ऑनरेबल कोर्ट हैज डिसमिस दोस केसेस। कहीं देयर इज नो सच सब्सटेंशियल थिंग जो जगह भी आप देखुं मीडिया रे, इट्स सिंपली ए मीडिया ट्रायल टू डिफेम ए पर्सन। जो जगह भी आप मीडिया ट्रायल देखिए, जो जगह भी आप देखिए कोठी अरेस्ट हो, कन्विक्शन रेट को सब चेष्टा करेंगे जानापी, तो कन्विक्शन रेट इज वेरी लो। सो दैट इज द रीजन इट्स सेड potential for misuse to silence the voice of the opposition or the voice of the dissent. Okay. Federal and democratic stability. Elected governments losing authority via arrest could destabilize the governance. Absolutely correct. कारण जदि इलेक्टेड आप देखिले मुझे जमी कहली एवं देखु अरविंद केजरीवाल को लगातार भाव में केसेस चली, सुप्रीम कोर्ट रे केस चली, बट कौन सी प्रकार फाइनल जजमेंट आज भी आसी ना। आगू को केबे आसीबो नो वन नोज, बट तांको फ्रिक्वेंटली जेल रे रखा गला, तो ओनली रीजन वाज द इलेक्शन। सो दिस वुड बी द केस। फेडरल एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को चैलेंज करूची, दैट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट वुड कैन बी टपल्ड। द बैलेंसिंग एक्ट, legitimate aim, strengthen accountability by preventing individuals with serious charges from wielding power. This is one such area where things can be improved, what we call, but misuse chances अधिका अछि। Checks and safeguards required कौन देखिबा। फर्स्ट, एक तो फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर फेयर हवा दरकार, ओके, अनबायस्ड हवा दरकार, इम्पार्शियल हवा दरकार, विथ ए रीजनेबल टाइम फ्रेम। व्हाट इज दिस रीजनेबल टाइम फ्रेम? इफ ए चीफ मिनिस्टर वुड बी सस्पेंडेड, सपोज आम ताको सस्पेंड करदेले 30 दिन पर्यंत अरेस्ट थिले बोली, बट व्हाट इफ तापरे 5 वर्ष हेलानी केस चली, 10 वर्ष हेलानी केस चलछि, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस? दैट मीन्स से पर्सन पुणी थे पॉलिटिक्स भितर को आसी परिबो नाही। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड, politically motivated arrest, this needs to be checked, okay, and independent agencies can do that। independent जो माने कि सरकार को different ministry जमती suppose ED CBI, they are coming under the home ministry, right? So as per that instruction they are doing their job। तेणु politically motivated arrest न होगी हवा कथा नुहे, एवं जमती इंडिपेंडेंट बॉडीज में कहूँ प्रिजर्विंग द एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू, कंसिडरिंग अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स लाइक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, एंश्योरिंग एक्सपीडिएंट जस्टिस विदाउट एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव। कारण जदि जन को हटई दिया गला एवं तापई कोनोसी चैलेंज करिवार कोनोसी ऑप्शन नाही कि से जाइए चैलेंज कर हायर कोर्ट रे, तो काइंड ऑफ आपण कहि परिबे इट सिंपली वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वे फॉरवर्ड, बैलेंस्ड अप्रोच देखिबा, एम्पावर ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ द बिल। सो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी वेयर बोथ द जेपीसी जोटा हमें कहूँ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा members would be there and they will have a detailed discussion on this, expanding legislative safeguards addressing presumptive guilt versus established conviction,
procedural clarity in handling arrest and office vacancy, oversight mechanism over investigating agencies. Okay, ये करा जाई पारे way forward रे. Emphasize transportable reforms like expediting judicial processes by politicians without compromising democratic institutions. That means judicial review रखिबा कथा, and there could be a fast track court to listen to these cases कारण ये काफ़ी sensitive है. So PM can be removed, CM can be removed, any such minister can be removed, and that removal is not on the ground of a proof in the court of law, rather only on the suspicious, only on the allegation. कारण हम justice system कहूची until proven innocent until proven guilty जोटा हमें कहूचे. So our system says that. So no one can be considered as guilty until proven in the court of law. तेणु बट ये तारा कॉन्ट्राडिक्टर विरुद्ध रे जाएगी ये बिल को इम्प्लीमेंट करा जाउची. नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी. 2 decades ago, a non-government backed currency stored only in virtual wallet seemed absurd. By 2025, crypto adoption has surged with businesses, millions of investors embracing it. Cryptocurrency is known as the digital currency. कारण digital currency आम ये कहूचे जमती आमर कॉइन अच्छी नोट्स अच्छी वी हैव हार्ड करेंसी फिजिकल करेंसी वी कैन सी द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस करेंसी बट वी कैन नॉट नो कि ये क्रिप्टो करेंसी रो आकार केमती शेप केमती हाउ डू इट लुक हाउ डज इट लुक तो आमर आइडिया ही नहीं. तो दैट इज डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी भी से कह जाए. सो दैट इज द रीजन there जो ना अच्छी क्रिप्टो करेंसी बिकॉज इट्स द रूट वर्ड फ्रॉम वेयर दिस क्रिप्टो हैज बिन डिराइव्ड. ओके, दैट इज ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस. डिजिटल करेंसी secured by cryptography, a particular kind of channel you can say cryptography. It is not authorized in India, neither by the government, nor by the RBI, nor by the SEBI. There are countries जो मैंने कि क्रिप्टो को आज ए लीगल टेंडर मनी हिसाब रे एक्सेप्ट करी सारे. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी होची जो मनी दैट इज रूपी कॉइन हैज बीन इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया and these coins are having the backup of the central bank. RBI is the nodal agency of that currencies. तेणु से कहुची कि क्रिप्टोर से भली कौन एजेन्सी ना जे इंडिया रे खास करके बाकी कंट्रीज तो धीरे धीरे से गुड़ आडप्ट कले. ऑपरेट्स इन ए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क. ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कौन डिसेंट्रलाइज होची there is no such a single command on this cryptocurrency. Every individual is having the transaction. Okay, तेणु बहुत चेष्टा भी करा जाइछि कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करिबा पई ट्रेस करिबा पई who is the owner of that, okay, who are the agency working on that. So it was not possible because crypto is working on a decentralized manner. Every individual will have the this crypto wallet and they are using blockchain analogy or blockchain technology. We can see blockchain technology is traditional ledger plus global Google Sheet, each page equal to a block. Blocks are linked sequentially, once sealed entries are permanent. Anyone in the network can view or add but cannot erase or tamper with the history. So you have this blockchain analogy as well कि जोठी ट्रेडिशनल लेजर एवं ग्लोबल गूगल सीट आपनकर मीट करूची. तेणु ये ब्लॉकचेन बेले बेले प्रश्न आसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड अंडर द क्रिप्टो करेंसी. आपण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेठी लिखिबे डिसेंट्रलाइज्ड मैनर रे. डिसेंट्रलाइज माने होची कोन द मु आपन को पे कली आपण रिसीव कले क्रिप्टो आपण गोटे क्या पे कले ये टाइप एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग देयर ओन ट्रांजैक्शन. गोटे सेंट्रलाइज्ड किसी अच्छी कि नथिंग.
But Jadio Indian government is not recognizing as the uh, what you call legal tender, but India government has started imposing tax on that. ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ tax ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. Now how it works, each transaction, that is Ram Syam, okay, or Syam to Nitish, gets added sequentially to blocks. Once a block is full, it's sealed with a hash and linked to the chain. Updates are visible to all the network members in real time, ensuring trust without a central government. Okay, so similarly ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରାମକୁ ଶ୍ୟାମ ଦେଲା, ଶ୍ୟାମକୁ ନୀତିଶ ଦେଲା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଷ୍ଟମର ଟୁ କଷ୍ଟମର ଭିତରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ ୟା ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି. ଓକେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ କୁହାଯାଉଛି. ୱାନ୍ସ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍, ଇଟ୍ସ ସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ ଦ ଚେନ୍. ଓକେ, ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ କ'ଣ? Transparency, everyone can see the transaction. Security, immutable records, encrypted system. Decentralization, no single authority. Power is distributed across the nodes. अच्छा, क्रिप्टोकरेन्सी रो फंक्शन जदि आपण देखिबे, करेन्सी रो फंक्शन कोन थाए? किछि गुड्स एंड सर्विस को अवेल करिबा पे. करेन्सी रो फंक्शन थाए गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करिबा पे. सो क्रिप्टोकरेन्सी इज used for that. Okay, and cryptocurrency को speculation market रे भी यूज करा जाए to gain some profit. Okay, स्पेकुलेशन मार्केट रे यूज करा जाए. क्रिप्टोकरेन्सी आपण इंटरनेशनल मार्केट रू प्रोडक्ट आपण परचेज करि परिबे. जेमति आपण बैंक अकाउंट रू पैसा दउचंदी सेही भली भाव रे आपण जे कोनोसी जेमति अलीबाबा लेट्स से. ओके, अलीबाबा भी आपण देखिबे, अलीबाबा जोटा आपणकर हाँ अलीबाबा चाइनार जो ई कमर्स गोटे अच्छे सेठू आप क्रिप्टो देकी किनीपारे. अलग जगह बहुत गुड़े कंट्रीज है जो मैंने क्रिप्टो को लीगल टेंडर या ऑथराइज्ड मनी रो डेजिग्नेशन दे सारे, तो से जगह आप यूज करें. नो, डिजिटल करेंसी इज नॉट यूज्ड बाय एनी एजेंसी, एनी गवर्नमेंट, एनी बैंक. इंडिया रे तो नुहे, अलग कंट्रीज धीरे धीरे एक्सेप्ट कले. इंडिया तो कौन कंट्रोल ना ता उपरे. ओके, केवल सरकार कहले कि जो मैंने जमती स्टॉक मार्केट आमर काम करुच्ची सेमती क्रिप्टो भी काम करुच्ची. तो सरकार कहले क्रिप्टो जो मैंने अर्न कर प्रॉफिट से आम टैक्स नबू, तो से टैक्स दौरान. नेक्स्ट हूँ न्यू डेप्टी एनएसए हैज बीन अपॉइंटेड. फॉर्मर सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह अपॉइंटेड एज द डेप्टी एनएसए. जो आपंकर एनएसए अच्छा अजीत ढोबल, तांको ये डेप्टी हिसाब से रहिबे. सीआरपीएफ आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह has been appointed the new deputy national security advisor with a mandate to handle internal affairs, official sources said. Oh, Anish Dayal was of 1988 batch Indian Police Service officer from the Manipur cadre, retired from service in December 2024. He brings extensive experience of the role, having served nearly 30 years in Intelligence Bureau before heading to Indo-Tibetan Border Police and most recently the CRPF. Okay, we'll see. National Security Advisor is the principal advisor to the Prime Minister, जे हमरो अजित डोभाल अछंदी, on national security and strategic matter. The post was created in 1998. मन रखते बेटा, the post was created 1998 by the Atal Bihari Vajpayee government. The NSA heads the National Security Council and plays a central role in India's security architect. Okay, Indian security architect. तेणु नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रो जे अछंती हेड सी ही हूँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. तेणु जे आमर अछंती अजित डोभाल, ही इज द हेडिंग
दिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी कि नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को कंप्लीटली कौन कर हेड कर बैटल फील्ड डेफिनेटली आम समस्त सपोर्ट आपण सहित अच्छी यहाँ गोटे सेंसिटिव जिनस एवं सरकार को काफ़ी आम डिफरेंट प्लेटफॉर्म रे डिफरेंट डिफरेंट माध्यम रे सरकार को रिक्वेस्ट करा जाउछि जिनस को हैंडल करने डील करने बट सरकार बोध हुए सरकार किसी अलग प्लान अच्छी माइट बी दे आर कमिंग ऑफ पार्लियामेंट सेशन सरिला मत लगुच कि गोटे डिसाइसिव जिनस से नहीं कि आसबे देखु कौन हो निश्चित भाव में आपंकर सहित सपोर्ट रही अच्छी आगू भी ओके तो फंक्शन एंड रोल कौन देखिए पॉलिसी एडवाइजर इंटरनल सिक्योरिटी आमर सिलेबस रे अच्छी तेणु इंटरनल सिक्योरिटी लेट से नक्सलिज्म टेररिज्म ओके अपार्ट फ्रॉम दैट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन अग्रेशन एक्सटर्नल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इशू डिफेंस जोटी आपंकर एम्बेसीज गुड़िक अच्छी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज रे सेठी जो मैंने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मैंने काम कर देखिए आपंकर लोकालिटी भी 2-3 जन इंटेलिजेंस ऑफिसर काम करुवे यू नेवर नो बिकॉज दे सिंपली कैन नॉट एक्सपोज देयर व्हाट यू कॉल आइडेंटिटी ओके से माने गोटे फॉल्स आइडेंटिटी आपण घर पाखे किए जड़े रोथुव आप घर पाखे सका उठिक से ऑफिस जाऊथुव यू नेवर नो कि से इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होता ही पारे आईबी ऑफिसर तेणु इमानकर काम हो डेली बेसिस रे इनफॉरमेशन गैदर करवा नॉट नेसेसरी कि जो जगह डिस्टर्बेंस अच्छी केवल से जगह एवरी डिटेल बिकॉज डिस्टर्बेंस और डिस्प्यूट और एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड कारण कौ टाइम रे कौ जिनस कौ टाइप रिजल्ट दब यू नेवर नो तेणु ऑलवेज दे आर डिप्लॉयड ऑन द ग्राउंड लेवल young officers they simply keep reporting to their seniors ultimately reporting कोठी जाउची सेंट्रल अथॉरिटी पाखक जाउची ओके तो ये हूँ गोटे जिनस इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट जब देखिए तो प्रॉपर्ली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को गोटे सेक्रेटेरिएट दि जाइए एवं से जगह भी मध्य ताकू हेड कर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप देखिए सरकार जो चली आपंकर ऑपरेशन सिंधु तो एनएसआर भी जो मैंने कमांडिंग ऑफिसर्स ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे सहित भी जो बाकी डिप्टी एनएसए एंड अदर ऑफिसर्स दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द मीटिंग तो से भी काम था कौन द डिसाइड द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्ट्राटेजी एंड फॉरेन पॉलिसीज ओके तेणु एमानकर सेठी मध्य रोल अच्छी कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज ऑब्वियसली आमर रॉ अच्छी आईबी अच्छी अदर पुलिस लोकल पुलिस अच्छा आर्म फोर्सेस अच्छा सो ऑब्वियसली दे विल हैव ए कोऑर्डिनेशन बेटर कोऑर्डिनेशन टू गैदर द इनफॉरमेशन आम एमती कहूचे पहलगाँव रे अटैक है एंड इंटेलिजेंस फेल्योर ओके कि जमती आमर जो आपंकर आईईडी ब्लास्ट होता आपंकर कश्मीर जो 40-41 पर्सनल्स वर डाइड सो से जगह भी वी ऑल्सो से कि इट वॉज completely an intelligence failure. So what is that intelligence? So any such inputs जो गुड़िक field officers माने दियंती they simply deal with that, simply decode that and finally top level पाखक जाए and as per their instruction सेठी न्यूट्रलाइज करा जाए जदि किसी सेमती थिबो तो से ऊपर एक्शन नहीं आजो तो ये पूरा गोटे ऑफिस काइंड ऑफ थिंग जंते हमें कहूँ ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज हैविंग 300 kind of officers they are working to conduct a smooth election in our country with respect to assembly, parliament, president, vice president. Similarly the national security council is having the people जो मैंने कि ये सब काम से मैंने करूँ इनफॉर्मेशन गैदर करूँ दे विल हैव ए इंटर कनेक्शन इंटर कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट एजेंसीज क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल आम जस्ट डिस्कस करते ऑपरेशन सिंदूर हो या एनी काइंड ऑफ टेरर अटैक हो एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो एनी काइंड ऑफ नक्सल इशू हो इफ़ यू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन you will have insurgent groups. If you go to the Jammu and Kashmir you will have insurgent groups. So जमती खालिस्तानी से मैंने करूँगी कि वी नीड ए सेपरेट स्टेट तो ये सब जिनस गुड़िक टू एनश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ
140 crores 140 plus crores of people in India एमानंकर सेटा होची काम ओके माने स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे इट्स ए काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ओके जमती आम नीति आयोग को देखुचे सेमती गोटे एग्जीक्यूटिव बॉडी एटा तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो नुहे डिफरेंट एजेंसी सेठी इंटर कोऑर्डिनेशन अच्छी कारण सेठी रॉ वाला भी किसी अच्छा सेठी आईबी वाला भी रोचुंदी सेठी आपणकर जो आपणकर कौन आर्म फोर्स जमती सीआरपीएफ हो गला कि सीआईएसएफ हो गला जमती आप देखिए जोटा आपणकर एसपीजी गोटे जो आपणकर अच्छी सी भी होगला तो यहाँ गोटे एग्जीक्यूटिव बॉडी जोटा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट गोटे कोऑर्डिनेटेड मैनर रे गोटे काउंसिल ये डेभलप करा जोटा को से हेड करूँ एनएसए एवं तांको किसी डेप्टी भी अच्छा आ मोस्टली दे आर फ्रॉम आप देखिए जो डेप्टी एनएसए मैंने था ये जमी आम डेप्टी एनएसए देखिले आईपीएस ऑफिसर जड़े सेमती आईएफएस जो फॉरेन वाला क्योंकि कहीं स्ट्रेटेजिक केस रे फॉरेन एक्सपर्टीज दरकार आईपीएस होगला आपणकर तापर आपणकर होगला जमती देखिए तापर आपणकर जमती होगला कि जो मैंने आईबी रे अच्छा आईबी रे से मानकर करियर 20 years 25 years तो ये टाइप जिनस ओके ना मूविंग टू द नेक्स्ट एयर ड्रॉप टेस्ट आम देखा इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर Gaganyaan मिशन ओके चलो देखा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT1 objective end-to-end demonstration of the parachute based deceleration system for the Gaganyaan crew model okay टेस्ट डिटेल देखिए डमी क्रू कैप्सूल वाज एयरलिफ्टेड ये देखिए आप ये डमी क्रू कैप्सूल थिला यानी कि या भितर आपणकर ये कैप्सूल ये जो डिवाइस भितर जो पर्सनल्स इंडिविजुअल माने मनीष यानी कि ह्यूमन बीइंग एठी रहिबे एवं समान को सेंड करा जिवो डमी क्रू कैप्सूल वाज एयरलिफ्टेड बाय चिनूक हेलीकॉप्टर एंड रिलीज्ड फ्रॉम ऑल्टीट्यूड मेन पैराचूट्स डिप्लॉयड इन सीक्वेंस टू डिसेलरेट द कैप्सूल फॉर सेफ splashdown simulated re-entry and descent phase risk astronauts will face during actual mission तो गोटे लेवल रु पैराचूट थ्रू रे भी से जमती लैंड करि परिबे सेफली लैंड करि परिबे से जिनस को ही टेस्टिंग करा जाउची ओके कारण सिमुलेटेड री-एंट्री डिसेंट फेज रिस्क ये सब जिनस अच्छी तो एक्चुअली कारण दे विल कम फ्रॉम द स्पेस ये तो गोटे अल्टीट्यूड रे हमें टेस्ट करूचे they will come from the space and at a particular height ru se mane parachute through re jemte land karibe okay Gaganyaan mission overview je dekhibe India's first human space flight program to send a 3-member crew into low earth orbit for 3 days followed by safe recovery timeline it's 25 to 26 so ebe jo apankara Subhanshu Shukla bhi jaitile he is sharing his own experience to ISRO and ISRO is planning with Gaganyaan that means a space mission human space mission in fact India is trying to do battlefield देखंतु आपनकर जो कंसर्न अच्छी मु कहबी आपण ठीक अच्छी किसी इरेगुलारिटीज रोची आपण ओडिशा रे जते एग्जाम अच्छी केवल ओपीएससी नुहे आपण ओपीएससी OSSC OSSC एग्जाम भी दिंतु तेणु को गोटे एग्जाम उपर रिलाय करिक न रही बाकी एग्जाम गुड़िक भी दिंतु ओके कारण यू नेवर नो कौ जगह आपणकर सर्विस या हो देन हायर लेवल को जीवाई चेष्टा करेंगे ओके सो डू नॉट स्टिक टू योरसेल्फ टू ए पर्टिकुलर एग्जाम यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर एफर्ट कारण बहुत गुड़े एग्जाम अच्छी दे विल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रिपरेशन नीडेड तेणु आपको इजी हम ठीक अच्छे की सेफ्टी सिस्टम देखा क्रू एस्केप सिस्टम मोटर्स डेवलप्ड एंड टेस्टेड एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम मॉडल रियलाइज्ड रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर यदि आप देखिए ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रिपरेशन फैसिलिटी
Gaganyaan control center and facility, crew training facility, modified second launch pad. So these are the different infrastructural aspects जो गुड़ी को यूज करा जाउची. सिग्निफिकेंस कौन देखो एक तो मेजर माइलस्टोन कहीं ना आम चेष्टा करूँ ह्यूमन बीइंग को स्पेस को सेंड करने एंड इट विल टेक लाइक फोर्थ पोजीशन और फोर्थ पोजीशन फॉर इंडिया आफ्टर यूएस रशिया एंड चाइना जो मैंने कि मैंड स्पेस मिशन ऑलरेडी लॉन्च कर सारे. Validates critical safety protocol for astronaut recovery and descent phases. Next देखिए women in CISF. To reach 10% women in force, CISF set to add 2,400 personnel. Organization Central Industrial Security Force CISF जोटा में कौच इनिशिएटिव कौन 2,400 women personnel ମାନଙ୍କୁ recruit करा जाउची. ओके एवं CISF is inducting a first ever all women commando team for core operation such as deployment at airports. तेणु CISF रो गोटे women wing separately से मैंने प्लान करूछन. CISF आपण देखिथिबे को जगह डिप्लॉय थांती जेमती एयरपोर्ट एंड पोर्ट मेट्रो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़िक अच्छी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़िक अच्छी जमती कहली पोर्ट एयरपोर्ट लेट्स से मेट्रो ओके ये सब जगह CISF मान को ही डिप्लॉय करा जाए. द रीजन हूँ फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जमती न्यूक्लियर पावर प्लांट लेट्स से और लेट्स से जमती आमर व्हीलर आइलैंड अच्छी अब्दुल कलाम आइलैंड जहाँ को आम कहे सेठी मिसाइल टेस्टिंग यूनिट सेठी भी आम कौन करें CISF मान को डिप्लॉय करा जाउची फॉर द बेटर सिक्योरिटी. तेणु से दे आर प्लानिंग टू हैव ए प्रॉपर सिंगल और complete women this thing. Okay. Good morning. Rule provides security cover to critical infrastructure, airports, metro, nuclear plants, PSUs, etc. Deployed for VIP security and disaster response. Relevance in line with Government of India's directive to ensure 10% women representation in all central armed police forces. Okay, so it's a Government of India's directive कि सबू जो armed forces गुड़िक अच्छे से mandatory 10% reservation रहिबो. Women representation रहिबो. या पूर्व भी आम देखीजे Supreme Court has given the judgment in favor of the combating role of the women in आपनकर जो आपनकर आर्मी रे भी एयरफोर्स रे ऑलरेडी कम्बाटिंग रोल रे में देखीजे खास करके ऑपरेशन सिंदूर रे भी वी हैव सीन एयरफोर्स रे जो कम्बाटिंग रोल रे अछंदी यानी कि जो एयरक्राफ्ट गुडी को से यूज कले आर्मी रे डिप्लॉय करा जिबार प्लान करा जाउची. सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट इन फेवर ऑफ दैट. सो बाकी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस गुड़िक अच्छी सेठी मध्य ये प्लान करा जाउची. रिलेवेंस होगला आपनकर. नेक्स्ट देखिबा CISF विषय 1969 रे एटा को फॉर्म करा जाइथिला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. प्राइमरी मैंडेट हूँ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फॉर PSUs प्राइवेट सेक्टर, एयरपोर्ट, मेट्रो, VIP प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, डिजास्टर रेस्पॉन्स, मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. सिग्निफिकेंस देखो एक तो women empowerment, obviously women role in armed forces, definitely women empowerment, equal representation in the different platforms in our society, gender mainstreaming in the security forces. जोटा कि हिस्ट्री जदि आप देखिए इट इज कंसिडर्ड ओनली ए मेल डोमिनेटेड फील्ड से जगह भी वुमेन मान को डिप्लॉय करा जाउची.
highlighting growing internal security and infrastructure protection needs. Next देखिए multi-layered air defense system. DRDO has tested multi-layered air defense system. Objective कौन? Comprehensive air defense coverage against a wide spectrum aerial threats. Operation Sindoor time रे हमें देखिए जिते ड्रोन अटैक होता फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड आमर जो से जिते आपनकर जो आंटी या न्यूट्रलाइजिंग जो आमर डिवाइसेस गुड़िक थिला जो वेपन गुड़िक थिला ताकू से न्यूट्रलाइज करूले खास करके जो आम एयर डिफेन्स सिस्टम जोटा कहे जदि आप सबुठ एडवांस देखिए खास करके इज्राएल जो आयरन डोम से मैंने यूज करूँ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू डू दैट बट एक्जिस्टिंग सिस्टम को भी आहरी रोबस्ट करने को चेष्टा करा जाउची फॉर एग्जांपल फाइटर एयरक्राफ्ट हो आपनकर ड्रोन हो जोटा आम कहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्रूज मिसाइल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सो वी नीड टू सम काइंड ऑफ सिस्टम जोटा कि गुड़ को न्यूट्रलाइज करा जाई परिबो बिकॉज वी हैव टू सच ग्रेट एनिमीज वी हैव जमती पाकिस्तान ऑन द वेस्टर्न साइड चाइना ऑन द नॉर्दर्न साइड तो वी नीड टू हैव ए प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड थैंक्स टू AS400 जोटा में यूज करी एंड इट गेव इमेंस रिजल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर सो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस यदि देखिए एनहांसेस इंडियाज एयर डिफेंस आर्किटेक्चर alongside the Akash Barak 8 and AS400 system, self-reliance in missile defense system, and protection of critical military and civilian assets. Okay. MCQs देखिए what triggers the removal of Prime Minister, Chief Minister, and other minister under the proposed 130th Constitutional Amendment Bill 2025. Okay. मेन जो तार फीचर को या फीचर कौन अच्छे देखो या प्रोविजन कौन अच्छे अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ फॉर 30 consecutive days in a case punishable by at least 5 years. Okay. Which articles of the constitution are proposed to be amended under the 130th bill 2025? ये होची आपनकर 75, 164 and 239AA. These are the articles need to be amended for this 130th bill. Which of the following best describes a cryptocurrency? A digital or virtual currency secured by the cryptography, often decentralized. Okay. In the context of cryptocurrency, the term blockchain refers to digitally is a decentralized digital ledger that records transactions securely in blocks linked chronologically. Okay. Then these are two mains questions regarding the 130th Constitutional Amendment Bill and DRDO multi-layered air defense system. These are the two mains question. Fine. So already हमरो आरंभ बैच स्टार्ट ही सरलानी 8.0 23rd August रे तेणु जो मैंने चाहूँगी जॉइन करने से मैंने जॉइन करें बाय यूजिंग द कोड JNLive. दुईटी ऑप्शन अच्छे आपण पाखे गोटे हूँ गोल्ड एवं 2 years वैलिडिटी सहित 11,999 प्लाटिनम 4 years वैलिडिटी सहित 18,999. ओके. सो 23rd August रू स्टार्ट हो JNLive कोड यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट पाइबे एवं एटी टेलीग्राम रे जॉइन करके PDF नहीं पारे. थैंक यू वेरी मच.